course is crystal clear. As I said, I'm doing this trading since last 4 to 5 months. I was more concentrating on the what do you say the pivot levels. Usually the pivot levels, the last highs and the last lows. Based on that, I was doing the trading part. Probably I am not earning a pretty good amount of money, but uh, I am happy with whatever I am doing. Okay. But today's the training session, it really boosted my energy, and I am pretty much confident that, as you said, it is a business. Since I am a businessman, into a business perspective, it will definitely earn good amount of money, and on for this I am really thankful to you, and thank you so much. And I am expecting my course to be a wonderful course in the next 1 month's time. इसके पहले तक इस CPR ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के पहले तक शेयर के जो चार्ट्स देखते थे आप किसी भी ऐप पे या नॉर्मल और अदर प्लेटफॉर्म पे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। CPR ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी के बाद ऐसा लगता है कि दे ऑल आर कनेक्टेड इन द वे दैट यू कैन मेक ए clear cut relationship, why this is going down, why this is going up, and what you need to do. So your chances of getting a successful trade is much higher than what you used to earlier do trading, and मतलब you are more calm in while trading because you know कि it will go up. तो आप अपना ट्रेड लगा के और स्टॉप लॉस लगा के आप अपना बाकी का मतलब व्हाट एवर द सेकंड जॉब यू आर डूइंग यू कैन डू इजीली। और शाम को 2:30 बजे के आसपास देख लो, आपको आपके हिसाब का ट्रेड मिल जाता है और आप ब्लॉक करके वापस आ जाओ। यू डोंट हैव टू वेट 320, है ना। यू विल नॉट लूज मनी। मतलब व्हाट आई थॉट के अगर आप सही टाइम पे एग्जिट नहीं करते हो तो भी यू विल आप शाम को जब 2:30 बजे आप देखोगे तो आप यू विल योर पोजीशन विल नॉट बी वेरी मच लोअर। तो इट इज अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा मार्जिन निकाल लेंगे, बट यू विल नॉट ऐसा नहीं हुआ कि आप बहुत सारा लूज कर गए शाम दोपहर तक इन इंट्राडे। अदरवाइज तो अर्लियर तो मतलब भगवान ही मालिक होता था कि आपने कुछ तो भी किया और कुछ तो भी आपके पास रिजल्ट आ रहा है। तो दैट वे इट इज वेरी गुड।